Mr. Dipankar Mukherjee, sir. Mr. Naveen Choudhary, sir, is an author and satirist. His political thriller, Janta Store, is soon going to be adapted as web series. He works as Associate Marketing Director at Oxford University Press and leads social science discipline marketing globally. It is an honor to have you with us, sir. And this gets even more delightful as we have Mr. Dipankar, sir, as the moderator who will be in conversation with Naveen, sir. Mr. Dipankar Mukherjee, sir, is the publisher and director of Readomania Publishing, an independent publishing house based in Delhi. Under his leadership, the house has produced over 120 books in just about 6 years, with some critically acclaimed and award winning titles as well. He teaches creative writing at many institutes and runs the popular Young Author Program. He is an engineer from Nagpur University, holds an MBA degree from IIT Madras, and has been in the corporate world for 9 years. Before becoming an entrepreneur, he also manages business interests in hospitality and manufacturing. I once again welcome you both, sir. Now, my dear audience, you're about to experience a conversation between extremely dynamic individuals. So, without skipping a moment, I humbly invite Dipankar sir to lead us ahead. Over to you, sir. धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबके सामने आज हम ये डिस्कशन हिंदी में करेंगे बिकॉज ये किताब हिंदी है एंड इंग्लिश भी होगा थोड़ा थोड़ा, बट प्राइमरीली हम हिंदी में बात करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए, नवीन, आपकी दोनों किताब पॉलिटिक्स पे है, तो क्या यह कहना सही होगा कि आपका पहला प्यार पॉलिटिक्स है? मैं राजस्थान में पढ़ा बड़ा हूँ, लेकिन मैं पैदा बिहार में हूँ, और बिहारी जब पैदा होते हैं ना तो हमें वैक्सीनेशन जो मिलता है पॉलिटिक्स का मिलता है, तो ये रीजन शायद आप कह सकते हैं। बट देयर इज वन मोर थिंग, जिस टाइम में हम बड़े हो रहे थे, क्या होता है आपके एनवायरनमेंट का हमेशा फर्क होता है। द टाइम व्हेन आई एंटर्ड इन टीन एज, और उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा चीजें समझना शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ाने का एक बड़ा हैबिट था, मेरे पापा प्रोफेसर हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ाते थे बहुत, तो खबरों को पढ़ना। सो आई रिमेम्बर व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, राजीव गांधी का, इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, और ये टाइम में धीरे धीरे हम कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो समहाउ न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक इंटरेस्ट आया, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस। तो मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया, फिर मैं चुनाव भी लड़ा, चुनाव हार भी गया, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत सारी नई चीजें समझ में आई थी। कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और उस इंटरेस्ट के साथ जो है वो फिर धीरे धीरे जब बुक लिखने की बात आई तो शुरुआत थी कि प्रेम कहानी लिखी जानी चाहिए, लेकिन सब प्रेम कहानी लिख रहे हैं, मैं नया क्या देने वाला हूँ, ये भी एक डिफरेंस था। मेरे पास नया नहीं था, एंड आई ऑलवेज वांटेड इफ आई एम राइटिंग समथिंग उसमें एक फ्रेश अप्रोच तो हो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, और जो लिखा गया है वो उन चीज़ों को कवर नहीं करता जो मैंने कवर किया है। सो देन आई थॉट पॉलिटिक्स, लेट्स डू इट। पहली बुक चल गई उसके ऊपर, तो दूसरी भी उसी पे आ गई। डिमांड था उसमें काफी सारा, उसमें कैरेक्टर है, उसकी डिमांड थी कैन ही कम अगेन, सो ही केम अगेन। बिल्कुल, जनता रिपोर्टर आपकी, जनता स्टोर आपकी पहली किताब थी, अब 2.5 साल आ गई है। अमेजोन पे तो बहुत ही रिव्यूज आ गए हैं ऑलरेडी, बहुत ही कम टाइम में। कुछ बताएं हमें इस नई किताब के बारे में। अब मैं जनता स्टोर से शुरू करता हूँ स्टोरी को। जनता स्टोर से इसलिए शुरू करता हूँ कि जनता स्टोर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कहानी है, जयपुर में बेस्ड है। एक सिंपल सा बच्चा कॉलेज में आता है, वो पॉलिटिक्स को देखता है, ही बिकम पार्ट ऑफ इट, और स्टेट का एक अपना पॉलिटिक्स चल रहा है। सो जनता स्टोर टेल्स यू हाउ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्क। अगर आप कोई मूवी देखें, गुलाल की बात करें, दिल दोस्ती एक्सेट्रा की बात करें, या ऐसी जो भी मूवीज हैं, इन सब मूवीज की जब आप बात करोगे तो आप देखोगे किसी एक की कहानी चल रही है, प्रेम कहानी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिक्स के जो दांव पेच हैं वो नहीं रहते हैं। और ये थॉट मुझे आया था 2016 के बाद, जब वो जेएनयू में इंसिडेंट हुआ। जेएनयू इंसिडेंट के बाद जो डिबेट थी, सो आई एम नॉट सेइंग व्हिच साइड यू आर, व्हिचएवर साइड यू आर दैट्स फाइन, लेकिन जो आपको दिख रहा है एटलीस्ट वो तो सामने से नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत कुछ और होता है। तो ये जो बहुत कुछ और कुछ चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, कुछ रिसर्च रहा, तो जनता स्टोर वहां से आया। और जनता स्टोर के बाद अब स्टूडेंट की बात आप कर चुके हैं, नाउ दिस टाइम पॉलिटिकली हम लोग बहुत डिवाइडेड हैं। मैं आज यहाँ आने से पहले एक ओल्ड एज होम में गया था, उनसे कुछ बातचीत करने के लिए। वहाँ भी कई सारे रीडर्स हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग, सो आई डिडंट टुक साइड ऑफ एनी साइड, मैं नॉर्मल पॉलिटिकल बात कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि उस एज में भी दे आर लाइक डिवाइडेड, कि आप ये जो कह रहे हैं ये ऐसे है, आप इसको ऐसे कहना चाहिए। सो दे वांटेड मी टू बी ऑन देयर साइड, बोथ साइड्स। सो ये जो पॉलिटिकल डिवीजन हो रहा है, आप लोगों को पता होगा, दोस्त ब्लॉक हो जाते हैं फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पर, रिश्तेदार होने लगे हैं ब्लॉक, कह रहे तुमने ऐसा कह दिया फलाने के बारे में तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। दिस इज द टाइम सोशल मीडिया इज यूज्ड लाइक एनीथिंग। हैशटैग को आप यूज कर रहे हैं और हैशटैग से ही खबरें बन रही हैं। अब खबरें जो है वैसे पहले ग्राउंड की तरह नहीं बन रही हैं, हैशटैग चलता है तो न्यूज आती है कहीं ना कहीं। तो ये जो हैशटैग है, क्या ये वाकई आपका गुस्सा है जो आप निकाल रहे हैं, या आपसे वो गुस्सा निकलवाया जा रहा है थ्रू दैट हैशटैग? मीडिया, गोदी मीडिया, सेकुलर मीडिया, ये दो टर्म आप लोगों ने सुने होंगे। सो दिस गोदी मीडिया और सेकुलर मीडिया, उसको छोड़िए, मीडिया का अपना एक बिजनेस है। आपको आज शायद ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मीडिया में मैंने 6 साल काम किया है, मेरा कैरियर शुरुआत वहीं से हुई थी। और मीडिया छोड़ने का कारण मेरा यही था कि वो बिजनेस एंगल जब मैंने देखना शुरू किया अंदर घुसने के बाद, तो मुझे लगा कि यही करना है तो किसी और इंडस्ट्री में जाओ जहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। सो आई मूव फ्रॉम दैट। सो मीडिया, आई हैव सीन दैट बिजनेस साइड ऑफ मीडिया, हाउ इट रियली वर्क्स, हाउ अ न्यूज इज प्लॉटेड, उस न्यूज को देना है कि नहीं देना है। तो ये सारी चीजें जो थी, बहुत सारा ऐसा रेलिवेंट मटेरियल जो आज हमारे आसपास हो रहा है, वो सारी चीजें इस कहानी का हिस्सा है। सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ रेप केस विच हैपेंड 3 years बैक इन आवर कंट्री। बहुत डिबेट हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, पॉलिटिकल डिबेट्स हुई, उसका एक बेस लिया गया है, लेकिन उसको उस स्टेट में नहीं रखा मैंने जिस स्टेट में वो हुआ था। ये राजस्थान में बेस है। राजस्थान में बेस करने का कारण ये था कि मुझे कई और चीजें जो कवर करनी थी, राजस्थान से थोड़ा मेरा कनेक्शन होने की वजह से इजी था। मेवात फॉर एग्जांपल, आपने वहां की बात सुनी होगी कि बीफ को लेकर बहुत बवाल हुआ। वहां की कहानी कुछ और ही है, जो आप जब ग्राउंड पे जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि भाई अखबारों में दिखा क्या रही है, वहां कुछ और ही होता है। आर्म्स का बिजनेस वो कुछ और ही है, वो कुछ और तरीके से हो रहा है। मुंगेर, मेड इन मुंगेर की बंदूकें अब नहीं चलती हैं, मेवात से बनता है, मेरठ से बनता है। तो ये जो नए हब क्रिएट हुए हैं, तो वो सारा रिसर्च, वो जो क्राइम है, वो क्राइम किस तरह से यूज होता है, मीडिया को कैसे यूज किया जाता है, एंड देन द चैलेंज वाज कि बोरिंग ना हो जाए। तो वो सस्पेंस वाला जो एलिमेंट है जनता स्टोर में भी काफी था, इसमें भी काफी सारा है। सो देयर इज अ जर्नलिस्ट, एक मिनिस्टर है, मीडिया है, वो सारे एंगल इसके अंदर आते हैं। और उस एंगल के साथ व्हाई द नेम ढाई चाल, सो बोथ नॉवल नेम आई थिंक। मैं थोड़ा वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट, आपने सोच कर कुछ रखा होगा नाम ये। सो जनता स्टोर जो है, अगर उसका सिंपल आंसर ये है कि जनता स्टोर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने एक मार्केट है जहां लड़के जाते हैं, तो वो अड्डा आप जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी अड्डा। बट दैट वाज जस्ट वन थॉट, इट इज नॉट द रियल रीजन व्हाई वी केप्ट दैट। बाद में मुझे लगा हमने ज्यादा सीरियस सोच लिया है। जनता स्टोर जो है वो एक्चुअली एक मार्केट है, इट इज नॉट अ शॉप। जनता स्टोर में 70-80 दुकानें हैं यूनिवर्सिटी के पास। जिस समय वो मार्केट बना था, उस मार्केट में एक पहली दुकान खुली थी, उसका नाम जनता स्टोर था, जहां से आप राशन लेके आते हैं। 2 साल के बाद दुकान बंद हो गई, एंड दिस 71-72 के आसपास बंद हो गई। हम हमने तो कभी देखा भी नहीं वो शॉप। उसके बाद जब उस मार्केट में और दुकानें खुलनी शुरू हुई, तो लोगों ने उसको जनता स्टोर ही कहा। मिठाई जनता स्टोर से आती है, फोटोकॉपी जनता स्टोर पे होती है, बाल कटवाने लोग जनता स्टोर पे जाते हैं, जो जनता स्टोर वहां है नहीं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस टू आवर डेमोक्रेसी। जनता स्टोर पे जनता स्टोर नहीं होते हुए भी जनता स्टोर है। हम जनतंत्र में रहते हैं, जन नहीं है, तंत्र ही तंत्र है, बट जनतंत्र है। दैट वाज अ थॉट विद दैट। ढाई चाल, ढाई चाल जो है ये शतरंज की एक चाल है। घोड़ा जो है वो सीधा चल के मुड़ता है, अगर आप में से कोई चेस खेलते हो। घोड़े की शय ऐसी होती है कि राजा को लगे तो राजा को अपनी जगह ही छोड़नी है, कोई और तरीका नहीं है, कोई बीच में आके बचा नहीं सकता कोई भी गोटी। राजनीति में ऐसे बहुत सारे घोड़े होते हैं जिनका इस्तेमाल इसी तरीके से होता है कि किसी को शह लगे और राजा को वहां से जगह छोड़नी पड़े, और घोड़े का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते उस समय में, कम से कम। इस किताब में ऐसे कई सारे घोड़े हैं जिन्होंने एक दूसरे को ढाई चाल दी है। सो मुझे अगर दीपांकर से सीधी फाइट करनी है तो मैं सीधी फाइट नहीं करूंगा इनसे, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा इनके ऊपर अटैक करने के लिए। एंड ही नोज डिस्पाइट दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग टू हिम। वो जो ढाई चाल है, वो ढाई चाल, इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स खेल रहे हैं। दैट इज द पार्ट। नागपुर भी उस सिलसिले में काफी एक्टिव होगा, बिकॉज नागपुर में बहुत स्टूडेंट्स हैं। इवन आई वाज अ स्टूडेंट हियर 20 साल पहले। मेरे रहते मुझे ये ध्यान नहीं है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था स्टूडेंट्स में, बट क्या अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में यहाँ पे एक्टिव है? किसी को कुछ पता? मेरे टाइम पे सुपर सीनियर्स हुआ करते थे, उनकी अलग पॉलिटिक्स होती थी। मेरे ख्याल से अभी भी होंगे सुपर सीनियर्स, वो तो जाएंगे नहीं कहीं। खैर, वापस किताब पे आते हैं। ये तो आपने कैरेक्टर्स की बात कर दी है, आपने सेटिंग की बात कर दी कि कहाँ कहानी बेस्ड है, लेकिन कहानी का प्लॉट, कहानी का आइडिया आपको वो कहाँ से आया, और आपने दोनों किताबों में कैसे वो चीज निकाली जो कहानी है बेसिक, वो कहाँ से आपको मिला? न्यूज़पेपर्स, मेरे लिए न्यूज़पेपर से बहुत सारा मसाला आता है। सो मैं अभी भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है, मैं निकलने के 20 साल बाद भी मैं टच में हूँ कि होता क्या है, अभी क्या चल रहा है।
न्यूज जो भी आती है, मैं किसी से भी न्यूज को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेता। आई ट्राई टू फाइंड आउट अनदर वर्जन ऑफ दैट न्यूज, और क्या हुआ होगा, और वहां से वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बननी शुरू होती हैं। सो वो जो जनता स्टोर में तो कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो यूनिवर्सिटी का था, वो पिक किया गया, और पॉलिटिशियंस को जो मैंने देखा उसको मिला के वो एक पूरी थीम बनी। तो दैट विल ऑब्वियसली, इसका मतलब ये है कि आप काफी रिसर्च करते हैं मैं आपकी काफी किताबों research पे। तो आपने अभी आर्म्स डीलिंग की भी बात करी, आपने अभी ये बीफ वाली बात करी, खतरनाक भी होता होगा। आप कैसे ग्राउंड लेवल रिसर्च आप कैसे करते हैं इन कहानियों के लिए? मैंने शुरुआत जो की थी इसमें, जिस जगह पे रेप हुआ मैं उस गांव भी गया था, जिस गांव में हुआ। थोड़ा सा मुझे मीडिया में रहने से ये हेल्प मिला कि जर्नलिस्ट लोग मिल जाते हैं उसके घर पहुंचने में। प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च आप जानते हैं, तो सेकेंडरी रिसर्च के बेस पे मैं शुरुआत हमेशा न्यूज़पेपर से करता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अबाउट उन्नाव रेप केस। उन्नाव रेप केस का जब मैंने स्टार्ट किया था रिसर्च, उन्नाव रेप केस जो है वो कुछ और था मेरी नज़र में, आप सबकी नज़र में कुछ और होगा। और मुझे जिस इस इंसिडेंट से 2 साल पहले की एक न्यूज़ इसी रिसर्च में मिली, एंड दैट चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव फॉर मी, कि ये कहानी कुछ और है, इस कहानी के पीछे कुछ और परतें हैं, और वहां से मेरा इंटरेस्ट इस कहानी के अंदर डेवलप हुआ था। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग न्यूज़, फिर उस न्यूज़ को मैंने अलग अलग सोर्सेज से देखना शुरू किया। हिंदू के एक जर्नलिस्ट से भी मैंने बात की थी जिन्होंने स्टोरी की थी वो 2 साल पहले वाली, उनसे मैंने बात की, उनसे मुझे कुछ नए इंसाइट मिले। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग कॉन्टेक्ट्स इन पुलिस डिपार्टमेंट कि उनका क्या कहना है, वहाँ के जर्नलिस्ट क्या कहते हैं। फिर मैं वहाँ गांव तक गया, वहाँ गांव में जाके बात हुई कुछ लोगों से, और मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलने शुरू हुए कि कहानी के कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। किसी भी चीज को आप सामने जो देखते हैं वो वास्तव में आपके सामने वैसा ही है, या उसके पीछे कितना कुछ है। और सारी चीजें आज हो रही हैं क्या आज ही हो रही हैं क्या, किसी चीज का बैकग्राउंड 20 साल पहले रखा गया था, ये भी हो सकता है वो 20 साल पहले कुछ किया गया हो, उसका इम्पैक्ट आप आज देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे वहां से मिलने शुरू हुए, तो उसके साथ वो कहानी डेवलप हुई। और वो फिर उसके बाद लगा कि मुझे इसको राजस्थान में बेस करना है, क्योंकि नोएडा में ही मेरा घर है, तो आप समझ सकते हैं नोएडा यूपी में पड़ता है। और राजस्थान में बेस करने का दूसरा फायदा ये था कि जनता स्टोर पे वेब सीरीज बन रही है, तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट था कि कहानी राजस्थान में ही होने से सेम स्टोरी कैन मूव फर्दर। आपने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किरदार पात्र बनाए आपकी पहली किताब में जो ऑन पॉपुलर डिमांड आप अपने सेकंड बुक में वापस ले आए। तो ए, आपने वो किरदार कैसे बनाए, कोई नेचुरल रियल लोगों पे बेस करके, और बी, ऐसा क्या खास था उनमें कि आपने उनको अपने सेकंड सीजन पे भी, सीजन कहते हैं हम सबको, सीजन ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, सेकंड सीजन में आप उसको वापस ला रहे हैं? मिहिर वीरानी बनाया था मैंने। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दे विल इवन रिमेम्बर हु इज मीर वीरानी। किसी को पता है मीर वीरानी कौन है? ओ, दे रिमेम्बर मीर वीरानी कौन है? सबको पता होगा मिहिर वीरानी। डू यू नो तुलसी वीरानी? एनीबॉडी हु नोस तुलसी वीरानी? एनीवन नोस? टेक्सटाइल मिनिस्टर। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अब तो शायद textile, हाँ। बाय द वे उन्होंने भी किताब लिख डाली है, लाल सलाम। सो स्मृति ईरानी यूज्ड टू बी एन एक्ट्रेस ऑन टीवी, एंड शी हैड दिस टीवी सीरीज कॉल्ड क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसका लीड मीर वीरानी था। एंड ही वाज सच अ हैपनिंग कैरेक्टर कि इन्होंने 20 साल पहले का इंस्पिरेशन लेके अब कैरेक्टर बना दिया। मुबारक हो आपको, बताइए कुछ। सो मिहिर वीरानी डाइड इन दैट सीरियल, और लोग इतना रोए थे उस टाइम, आप मम्मी लोग से पूछना, वो लोग रोए थे लिटरली, घरों में मातम बना था, खाना नहीं बना था। लेकिन फोटो हाउस एक्टर की लगी थी। उसके बाद मिहिर वीरानी को जिंदा किया गया था। सो एनीवे, मेरा कैरेक्टर मरा नहीं था। जनता स्टोर का जब कैरेक्टर क्रिएट हो रहे थे, सो हाउ आई क्रिएट अ कैरेक्टर, सो कई बार होता है कि आप एक आदमी को देखते हैं, लेकिन मुझे ग्रे शेड बहुत पसंद है। मेरा कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, पूरी तरह से बेईमान भी नहीं होगा, सबके अंदर, पूरे कैरेक्टर के अंदर कुछ अच्छे पार्ट्स हैं, इधर वाले के पास कुछ नेगेटिव साइड है, तो ग्रे शेड में मेरे कैरेक्टर्स हैं। और ये क्या होता है कि कई बार किसी एक आदमी में दिखते हैं, कई बार कई आदमियों में दिखते हैं, तो मैं उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करता हूँ कि अच्छा, ये दीपांकर का ये वाला हिस्सा जो है मुझे बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैम का ये पोर्शन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से ये बात करते हैं, मैं उनको मिला देता हूँ। उनको मिला के जो कैरेक्टर्स हैं इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। दूसरा, एज अ राइटर मुझे लगता है कि कैरेक्टर से कोई क्यों जुड़ता है। कैरेक्टर से जुड़ने के 2 कारण हैं, या तो वो ऐसा कुछ करे जो आप नहीं कर सकते। सिंघम आया, मुक्का मारा, साला भोगा मिनिस्टर का, उसको गाड़ी में बांधो, उड़ा दो, हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। सिंघम हमें पसंद है। दूसरा कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए मिहिर वीरानी जैसा, जो मेरे घर का कैरेक्टर है, वो जो मेरे साथ रहता था कभी, या मैंने पड़ोस के घर में किसी बबलू भैया को देखा था। तो क्या ऐसा कोई कैरेक्टर है? सो मयूर भारद्वाज वॉज सच कैरेक्टर, जो कि यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास में कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर होगा, हो सकता है आप ही हो, आपको लगे ये तो मैं हूं, या मेरे क्लास में एक लड़का ऐसा है जो कि इस तरह का था,
वो इस तरह की बातें करता था, वो ऐसा ऐसा किया करता था। तो जैसे ही आपका वो कनेक्शन बनना शुरू होता है, उस कैरेक्टर के साथ आप जर्नी करते हैं, उसके साथ कुछ अच्छा होता है, आपको अच्छा लगता है, उसके साथ बुरा होता है, बुरा होता है। आप में से कई लोग होंगे, मैं तो मूवी देखते हुए रो देता हूँ, तो कई लोग होते हैं मूवी देखते हुए कुछ सीन के साथ आप रो देते हैं, क्योंकि आप उस कैरेक्टर के साथ जर्नी शुरू कर देते हैं। सेम हैपेंड विद मयूर, और ये मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मयूर के साथ जो है लोग उस तरह से जुड़ेंगे कि उसके कैरेक्टर के साथ जुड़ते चले गए कि उसके साथ जो हो रहा है वो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब एक ने बीच में पढ़ते हुए, मयूर बीच में एक इलेक्शन उसमें हार गया है, तो पढ़ते हुए किसी ने बोला हम यहाँ तक पहुंचे, हरा क्यों दिया उसको? मैंने कहा आगे बढ़ो यार, जिता भी देंगे, आगे तो बढ़ो। तो वो जो कनेक्शन है वो कैरेक्टर का बनता है। तो व्हेन आई क्रिएट अ कैरेक्टर, आई ट्राई टू फाइंड समथिंग अराउंड अस, हमारे बीच में से है। जो सीएम का कैरेक्टर जनता स्टोर में था, वो 3 राजस्थान के सीएम्स का मिक्स कैरेक्टर है, तीनों के ट्रेड्स जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही कोई पढ़ना शुरू करता है ना, आपको एकदम से ध्यान आता है कि अच्छा ये तो फलाने भी हैं, ये फलाने भी हैं। इसमें कैरेक्टर है ढाईचाल में नारायण नाम्बियार। नारायण नाम्बियार का नाम पहले मैंने कुछ और रखा था, बोलूंगा तो पिट सकता हूँ तो नहीं बोलता, लेकिन नारायण नाम्बियार का नाम बाद में मैंने चेंज किया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नारायण नाम्बियार को पढ़ते हुए आप मुझे एंड में आप बता देंगे कि आपने किसके ऊपर ये बनाया है। तो वो कैरेक्टर की जर्नी उस तरीके से है कि आप उस कैरेक्टर को पढ़ते हैं, फिर आप कनेक्ट करते हैं। आप, how many of you are interested in politics or even aware of politics? Okay, I see only a bunch of young kids there. This entire bunch is so. आपसे एक सवाल था. The reason मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि हमें लगता है, सिर्फ मुझे लगता है कि the younger audience is not very interested or aware of the political scenario in the country, and जिस चलते उनको political information and news अलग अलग तरीकों से देनी पड़ती है, and किताबें बहुत important role play करती है. What do you think about this? आई कंप्लीटली एग्री। और मुझे लगता है कि अगर यूथ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो फिर फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में मत पार्टिसिपेट करो, आप कोई इंटरेस्ट मत लो, पॉलिटिक्स का आप में इंटरेस्ट है, इसलिए आपको लेना है। यंगर ऑडियंस की भाषा में हम बात कर रहे हैं, अगर आपको पता लगे कि यार वो लड़की मुझे देख रही थी, तो आप भी इसको देखते ही है ना, लड़कियां भी देखती हैं कि अच्छा वो लड़का बार बार देखता है, कौन है ये, देख लो, भले ही आप आगे कुछ हो ना हो, लेकिन देखते हैं आप। अभी लॉकडाउन लग जाए तो आप क्या कर लेंगे? पॉलिटिक्स का डिसीजन है। अगर सरकार डिसाइड करे कि वोट देने की एज जो है 25 साल हो जाएगी, आप क्या कर लेंगे? सरकार का डिसीजन है। अगर सरकार ने पेट्रोल के दाम गिरा दिए, बढ़ा दिए, आप क्या कर लेंगे? ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में आपकी हर सांस के साथ चल रही है। या कॉलेज खोल दिया, आप क्या करेंगे? कॉलेज खोल क्या दिया। करेंगे? तो आपको उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना होगा अगर आप ये चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से चेंज हों। हम नॉर्मली होता है कि सब नेता चोर हैं, सब नेता चोर हैं। आपने क्या किया उस नेता को सही करने के लिए? तो हमने ये किया कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमने कहा कि पॉलिटिक्स इज बैड थिंग, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट इंटरेस्ट यू हैव टू टेक। और मुझे हमेशा लगता है कि यूथ 1975 में इमरजेंसी लगी थी, आप, मैं भी पैदा नहीं हुआ था तो आपको तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन 75 के बाद 78 में जब नई सरकार बनी थी, वो इमरजेंसी हटना और जब पूरा एक चेंज हुआ था पूरे देश में, वो चेंज यूथ लेके आया था। जेपी का आंदोलन जो था, जेपी एल्डर थे, लेकिन उनके पीछे जो पूरी भीड़ थी, जिस भीड़ ने उस चीज को चेंज किया, वो यूथ था। रिसेंट छोड़ दीजिए, आप अन्ना के टाइम में भी अगर आप देख लीजिए, अन्ना के टाइम में जो सोशल मीडिया, अगेन डोंट गो बाय एनी आइडियोलॉजी, डोंट जज इट बाय आइडियोलॉजी, जब भी हम इस सब बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अन्ना के टाइम में भी जो सारा का सारा कैंपेन चला, जो एकदम से चेंज की बात हुई, वो यूथ था जो सोशल मीडिया पे बात कर रहा था। तो ये जो है, हमें उसका हिस्सा बनना है अगर हम इस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, और इसका पार्ट हमें होना ही होगा। बुक्स जो है आपको इसलिए, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो आपको नहीं बता सकता क्या होता है। और एक मीडिया हाउस, आज की तारीख में किसी एक मीडिया हाउस को तो भरोसा ही मत करना, 2.5 पढ़ने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आपको कम से कम 2-3 मीडिया हाउसेस, अलग अलग न्यूज सोर्स पढ़ने चाहिए। मैं तो ट्विटर को भी आजकल बहुत वो मानता हूँ कि एक न्यूज गिविंग सोर्स है वो, और उस न्यूज पब्लिशर, बिल्कुल। और आप वहां से जब इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं, क्या आप उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा आपको एनालाइज करेंगे ना, आपको सही और गलत दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज है जो सही है, कौन सी चीज है जो गलत हो रही है यहाँ पे। और आप एक सही न्यूज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन आपको उससे क्या हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो हम क्रिप करते रहेंगे कि ये तो सब खराब होता है यहाँ पे। बट एक बात बताइए, यंगस्टर्स लोग अपने करियर बनाएं अपनी इस सुपर कॉम्पिटिटिव एरा में, अपनी लाइफ को देखें या पॉलिटिक्स को देखें? बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन.
तो हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा एजिटेट हो जाएं कि वो अपना मेन काम छोड़ के वहीं चले जाएं. Is that a good idea? Do you think that's a nice way to look at it? पॉलिटिक्स को अगर कैरियर की तरह लेना शुरू करें तो मुझे लगता है बहुत कुछ चेंज हो जाएगा. यंगर ऑडियंस लेना शुरू करे, अगर यूथ लेना शुरू करे तो हम वो कैरियर की तरह नहीं लेते हैं. लेकिन दूसरी चीज है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है जाके. आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, ये भी हम वही पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम वही पॉलिटिक्स का पार्ट बन रहे हैं. और आप पॉलिटिक्स का पार्ट कई तरीके से बन सकते हैं. आप एक डिबेट के थ्रू हो सकते हैं, आप गलत चीजों का विरोध करके उसका हिस्सा बन सकते हैं. आपको चुनाव लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए. तो वो जो चेंज है वो मुझे लगता है कि बड़े आराम से किया जा सकता है. अगर जो कैरियर की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन ना आया होता तो मेरे जैसे अबव एवरेज बट नॉट जीनियस बच्चों को नौकरी ना मिली होती. कॉर्पोरेट सेक्टर जो ओपन हुआ, तो ये पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए, ये कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है. तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपके साथ होंगी, आप उसका हिस्सा किसी भी तरीके से बन सकते हैं. आप अपने ओपिनियन को देके बन सकते हैं. आप उस डिस्कशन को, आप उस नेता की गलत चीज का विरोध करके भी आप एक नेता को मजबूर कर सकते हैं कि आप ये न करें. मैं बहुत रिसेंट एक रियल लाइफ का अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. मेरी छोटी बहन, मेरी सगी बहन राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है. और एक मिनिस्टर के कुछ कहने पे कि हमारा ये काम कर देना है, उसने कहा ठीक है सर देख लेंगे, लेकिन एज पर द पेपर वो नहीं हो सकता था. उन्होंने उसको एपीओ करवा दिया. एपीओ होता है, उसमें आप सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन आप उस पोजीशन से हट जाते हैं, वेट करते हैं फॉर अदर थिंग. वो कोर्ट में गई, लेके आई, और उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए जिन्होंने काम किया. मिनिस्टर जो है उनको कहा गया कि भैया अब आप इस केस को छोड़ दें. सीएम की तरफ से अपोजिशन भी आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और बाद में उसको ट्रांसफर करके कहीं और बिठाया कि आप यहाँ से काम करिए, बढ़िया है. तो ये जो पार्टिसिपेशन था वहां के लोगों का, इस पार्टिसिपेशन ने एक पावरफुल मिनिस्टर को इस लेवल पे लाके, अधिकारी अपना काम ठीक कर रहा है, और जनता का जो पार्टिसिपेशन था, दैट एक्चुअली हेल्प्ड हर टू स्टे देयर. आपकी किताबों में भी आपने ये बहुत डिटेल में लिखा है. आपने काइंड ऑफ ये बयां कर दिया है कि पॉलिटिक्स का गेम बहुत ही डर्टी होता है, राइट? सो और हमारे इंडिया में, सोसाइटी में ये सिखाया जाता है पॉलिटिक्स से दूर रहें. ये पूरा वाक्य और आप जो अभी कह रहे हैं, इन दिनों में जमीन आसमान का फर्क है. तो इनका लिंक कैसे बनाया जाए? क्योंकि जिसका एंड है, एंड उस होप के साथ है कि ये चेंज होगा, तो होगा कैसे. जो जस्टिस है, वो जस्टिस जब मिला है, तो वो जस्टिस आया कहाँ से? आसान नहीं था. और आसान नहीं था, ऐसा भी नहीं हुआ है कि जो सिंघम की मैं बात करता कि सिंघम की तरह वो जाके कुछ कर दिया हो. वो सारा कुछ सिस्टम के तरीके से हुआ है, डिप्लोमेसी से हुआ है, कुछ जगह पे डिप्लोमेसी भी हुई है. उसको करते हुए उस सिस्टम को चेंज किया गया. और वो जो एक व्यक्ति, जो मयूर भारद्वाज जो प्रोटैगनिस्ट है, जब उस सिस्टम का यूज करता है, उसी मीडिया को जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उसी मीडिया के इस्तेमाल से, उन्हीं लोगों के इस्तेमाल से, उसी सोशल मीडिया से वो एक पूरा प्लान तैयार करता है कि कैसे विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए. तो वो जो होपफुल है, वो सिस्टम भी इसके अंदर है. तो पॉलिटिक्स की गंदगी सारी है. उस सारी गंदगी को देखने के बाद भी जो है हम उसको साफ करते हैं. हमारे घर का टॉयलेट भी तो हम साफ करते ही है ना. तो ये सिस्टम का क्यों नहीं करना है? आप लोगों में से कौन न्यूज़ देखता है रेगुलरली, और किस प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम करते हैं न्यूज़? आप लोग टीवी देखते हैं, या फिर आप ट्विटर देखते हैं, या फेसबुक देखते हैं, या कोई न्यूज़ ऐप है आप लोगों के पास? न्यूज़ इंस्टाग्राम, ओके, bunch of apps, okay, ओके. एनीबडी एल्स? कोई और जो कहीं आप लोग न्यूज़ नहीं देखते? बाकी लोग, हाँ हाँ, आप लोग कहाँ देखते हैं? कम ऑन, यू कैन स्पीक अप. टीवी चैनल्स, आज तक, ओके ओके. आपसे ये सवाल था मेरा कि आपने कहा मीडिया हाउसेस सबका पॉलिटिकल एजेंडा होता है. आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन अ स्पॉट एंड आस्क यू, आप किस चैनल को रेकमेंड करेंगे? आपको जो पसंद आए वो देखिए. दैट्स अ पॉलिटिकल आंसर. नहीं 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 नहीं, आपको जो पसंद आए वो देखिए, और जो आपको बिल्कुल ना पसंद हो. सो इफ यू आर अ फैन ऑफ रवीश, वॉच अर्नब ऑल्सो. Watch Ravish, watch Arnab also. If you are a fan of Arnab, watch Ravish also. Try to find out what different they are saying. बहुत आसान हो जाता है चेक कर लेना कि कौन सी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके बाद तो आपके पास बहुत सारे एप्स हैं, वहां से आप देख सकते हैं. सो आपने फाइनेंस का मेकर चेकर प्रिंसिपल न्यूज में भी डाल दिया कि एक न्यूज मेकर है और एक न्यूज चेकर है, आप दोनों को देखिए. सिचुएशन ऐसी बन चुकी है हमारे पास, जो ये हम करना नहीं चाहते. ऑफ कोर्स ये हमारा काम नहीं था, हमें सिंपल न्यूज चाहिए थी. बट वी आर इन अ सिचुएशन जहां न्यूज इस तरह से चेंज हो चुकी है, हमारे माइंड को इस तरह से एक नैरेटिव सेट हो रहा है सब तरह से. पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं, दोनों दोनों टाइम में हुआ है. बिफोर दिस गवर्नमेंट, आफ्टर दिस गवर्नमेंट, नैरेटिव सबने अपने अपने सेट किए हैं. जब वो नैरेटिव सेट हो रहा है और
व्हाट इज योर आइडिया? आपको उस नैरेटिव के साथ जाना है, आपने डिसाइड किया कि ऐसा ही होना चाहिए, देन गो अहेड व्हाटएवर यू वांट। अगर आपको ये लगता है कि आने वाले समय में आप जब मेरी उम्र में आए या और आगे की उम्र में जाए, आपकी जिंदगी अच्छी हो, इस देश में रहने की इच्छा रहे, तो आपको जैसा देश बनाना है उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, फिर ये मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं भी 2 ही न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार अब और चीजें देखने की जरूरत है। न्यूज़ चैनल तो खैर मैंने बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, कई लोगों के ओपिनियंस भी पढ़ता हूँ कि वो क्या कहते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं अपने हिसाब से रियलिटी को निकाल सकूं, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को बड़े होते हुए एक ऐसे देश में नहीं रखना है जहां पे कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते आइडियोलॉजी के बेस पे, जहां उसको ये देश इसलिए छोड़ के जाना पड़े कि यहाँ रह के मैं क्या ही करूंगा, अरे यहीं पैदा हुआ, यहाँ रह के क्या नहीं कर सकता वो, तो वो बाहर ना जाए। तो जो कंट्री मुझे बनानी है उसके लिए मुझे इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये बहुत टाइम नहीं लेता है, एक न्यूज के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी। पॉलिटिकल किताब लिखी है आपने, कोई रैमिफिकेशन हुआ, किसी ने धमकाया, किसी ने कुछ बोला आपको किताब पढ़ के कभी कि आपने क्यों लिख डाला, नहीं लिखना चाहिए था, ये बैन कल्चर क्या है, आसपास इर्द गिर्द कुछ हुआ? नहीं, सबसे अच्छी चीज होती है किताबें पढ़ते नहीं ऐसे लोग तो टेंशन नहीं। मूवी मुझे लगता है जब वेब सीरीज आएगी तो हो सकता है कि ड्रामा हो जाए, क्योंकि वो तो फिर भी देख लेते हैं, बाकी ये पढ़ने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे इस टाइम चिंता नहीं होती है। मेरे एडिटर को जरूर चिंता हो जाती है, वो उन्होंने तो बहुत सारे पोर्शन 2.5-4 में हटवा दिए, और वो जब मैंने अनएडिटेड पोर्शन लोगों को पढ़ाया तो कहते हैं यार ये तो होना ही होना चाहिए था इसका हिस्सा, बट उनका भी मुझे लगता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक बात है कि अगर क्यों ऐसे किसी उसमें जाना, हम चाहते हैं लोग पढ़ें चीज़ों को और समझें। ठीक है, मैं शायद वो जो 2 पेज लिख रहा था वो एक पैराग्राफ में रह गया है, तो उस एक पैराग्राफ पे अगर किसी को इंटरेस्ट बनता है उसको जानना, तो कोशिश तो करे कि ऐसा क्यों होता है वहाँ। जब मैंने मेवात की बीफ की बात की, आप एक बार उस न्यूज़ सर्च करना शुरू करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप 90s की न्यूज़ गूगल पे मिलती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं कहीं मिल जाएगा, ट्राई टू फाइंड दैट। बहुत से आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, न्यूज में मिले, जर्नल्स कुछ एक मिलेंगे, अल्वर मूवमेंट सर्च करिएगा, आपको वहां से एक पूरा कहानी नई दिखेगी कि जो आज हो रहा है उसके पीछे कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा आखिरी सवाल बिफोर आई मूव ऑन टू द ऑडियंस, आपने इतने शहरों में घूमकर आपने पब्लिसिटी करी, इतने लोगों से मिले आप लोग, तो एक शहर का रीडर और एक नॉन शहर का रीडर, आपने कोई अंतर देखा, आपने कोई कंपैरिजन देखा कि हाँ शहर के लोग ये पढ़ना चाहते हैं और जो शहर के नहीं? माय क्वेश्चन इज मेट्रो नॉन मेट्रो रादर, मेट्रो के लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, नॉन मेट्रो के लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको मिला ऐसा? टॉपिक्स के केस में तो खैर ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि नॉन मेट्रो के जो रीडर्स हैं वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं, वो ज्यादा सीरियस है। मेट्रो में एक्चुअली आपके पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आपके पास डिस्ट्रक्शन के ऑप्शंस बहुत, तरीके बहुत सारे हैं, तो वो पढ़ते हैं, और मुझे ऐसा मेरा परसेप्शन हो सकता है किसी और का कुछ और हो, तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है। हिंदी के केस में बहुत स्पेसिफिकली जब आप छोटे शहरों में जाना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि लोग वहाँ पे किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो कनेक्ट करते हैं, एंड दे वांट टू डिस्कस दैट, वो आपसे आके बातें करना शुरू करते हैं कि क्या है ये और किस तरह से आपने लिखा था। जो हम बातें कर रहे थे बहुत सी बातें वहां जाके होती हैं। मैं अभी पटना, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में गया था, और प्लान कुछ भी नहीं था, मुझे ये था कि बुक स्टोर्स में जाएंगे क्योंकि बुक जस्ट रिलीज हुई थी, जाके मैं साइन कर दूंगा, बाय रोड में ट्रेवल कर रहा था अपने गांव तक। लेकिन जब वहां जाना शुरू किया तो फेसबुक पे डालना शुरू किया और बुक स्टोर्स पे लोग आने शुरू हुए, और बुक स्टोर से बुक स्टोर छोड़िए, उस बुक स्टोर के आसपास जहां जहां हमने बुक्स रखवाई थी वैसे मंगवानी पड़ी, वो खत्म हो गई। तो वो इंटरेस्ट इसी से क्रिएट होता है कि वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और जैसे ही आप डायरेक्ट बात करते हैं ना, उनको कुछ नई चीज समझने में आती है, उनके कई बार अपने क्वेश्चंस होते हैं, आप उसका आंसर कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन मुझे लगता है कि वो ज्यादा मुझे वहां मिला। दिल्ली में वो कनेक्शन उस तरीके का कभी नहीं दिखा मुझे, हिंदी में नहीं होगा, मे बी इंग्लिश में हो। काफी अजीब और इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, अब आते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल किसी का? जी सर। जी सर, उसका अभी मैं नाम नहीं ले सकता एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, बट 22 एंड या 23 बिगनिंग। तो पैसा बहुत अच्छा मिलता है पैसा बहुत अच्छा मिलता है। पैसा छोड़ के एक्सपोजर ये भी मिलता है कि किताब पॉपुलर हो जाती है, ऑथर जो हैं वो स्टार बन जाते हैं, वैसे ही दिखने में अच्छे हैं तो ये स्टार बन ही सकते हैं, तो स्टार बन जाते हैं। साथ में इनके और अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं क्योंकि इनको स्क्रीन राइटिंग के लिए और काम मिलता होगा। लोग बोलेंगे कि आप इस कैरेक्टर को, मैं कॉपीराइट लेता हूँ, इस कैरेक्टर के 10 कहानियां लिख डालिए, तो दीज आर द थिंग्स विच स्टार्ट ओपनिंग अप फॉर द ऑथर। Exactly, this happens. ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
ऐसा दो ही सिचुएशन में होता है, या तो मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ शंका बची नहीं है, या कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहली वाली सिचुएशन होगी। मैं नेगेटिव कुछ भी नहीं मानता किसी चीज को। या फिर यहाँ खाना बहुत अच्छा मिल रहा होगा इन लोगों को, हाँ। खाकर आए हैं सोने के लिए एसी के अंदर. In any case, I think it was a very entertaining session for us. Thank you very much. Do we have time for a few more questions? Time up हो गया? Oh, okay. Okay. ठीक है. Thank you so much. Thank you बहुत very अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत मजा आया. थैंक यू दीपांकर। Over to you. एंड आप लोग जाइएगा नहीं, नेक्स्ट सेशन यहीं हो रहा है और पॉलिटिक्स पे ही है, बाकी स्पीकर्स भी यहीं हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। Thank you so much, Naveen sir and Dipankar sir, for that wonderful session. You want to be part of it? Editor with the Times of India and has worked with the Hindustan Times, the Indian Express, and several other publications in the past. It's an honor to have you with us, Purandare sir. Also, we have Sujit sir. He is the former global head of governance with the Aga Khan Foundation, Geneva. He currently works as the global CEO for an international aid agency working towards improving the quality of life of the marginalized and disadvantaged section of the society across Asia and Africa. He also writes columns regularly on South Asian affairs for leading international dailies. This is his second book after the critically acclaimed In Search of a New Afghanistan, published in May 2012. Sarkar sir had its formal education in development from India and an advanced management course from Case Western Reserve University, Ohio. He is born in 1970 and brought up in Jamshedpur. He currently lives in New Delhi. Also, before moving ahead, I would like to take a moment and acknowledge the support of Rupa Publication as the association is valuable to OCLF. Also, we have Naveen sir as the speaker for this session. Now, my dear audience, you are about to witness a conversation between very dynamic and prolific individuals. So without skipping a moment, I humbly invite Mr. Naveen sir to lead us ahead. So please. Thank you very much, and thank you for bearing me for another 40 minutes. So, before starting the session, Sujit sir ka flight hai, so there he might leave in between. So I'll start questioning him first. Afghanistan, we have heard a lot in news these days, and Taliban ki sari news thi. So you were there in search of new Afghanistan, but when I read the history of Afghanistan, somewhere this area was always troubled. वहाँ पे जो है आप historically भी देखें तो वहाँ पे लड़ाइयाँ काफी हुई हैं. Then Soviet war phase, then this phase.
So why Afghanistan is that much importance? Why it is always in that kind of situation? इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स से लेके और काफी कुछ था हमारे यहाँ, पैसा था, बहुत सारे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से लड़ाई हुई, लेकिन अफगानिस्तान के पास वो सब चीजें भी नहीं है. तो व्हाट इज द रीजन व्हाई अफगानिस्तान इज इन दिस सिचुएशन? तो चूंकि आपने हिंदी में सवाल किया तो मैं जवाब हिंदी में दे रहा हूँ। सुबह से इंग्लिश बोलकर परेशान भी हो गया हूँ। तो मैं ऐसे गवर्नेंस एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में पहले समझा रहा हूँ। आप अगर साउथ एशिया में किसी भी नेशन को देख लीजिए, वो स्टेबल क्यों हुआ है? वो स्टेबल ये हुआ इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट आया और गवर्नेंस हुआ है। वो उसी से उसको स्टेबिलिटी मिली है। किसी भी कंट्री को आप पकड़ के ले लीजिए। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के साथ ये नहीं हुआ। वहां पे कभी भी गवर्नमेंट रहा नहीं और गवर्नेंस नहीं रहा। मैंने अपनी किताब, अभी जो नई किताब आई है रूपा पब्लिकेशन के साथ, अप्रैल में रिलीज हुई है, सॉरी सितंबर 16 में रिलीज हुई है, मैंने उसमें लिखा है कि फॉर अफगान्स नेशन कम सेकेंड। फर्स्ट थिंग उसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो होता है उसका इथनिसिटी, और किस रीजन पे है और वो किस लीडर का है, आदमी है, वो उसको पहला मोटिवेशन देता है। मैं हमेशा अफगान आर्मी से पूछता था, वहां जब मैं काम करता था, मेरी पोस्टिंग थी वहां 5-6 साल, कि यार आपका ड्रीम क्या है? हमारे तो कोई भी सैनिक बोलते हैं हिंदुस्तान तिरंगा में लिपट के आएंगे, ये मेरा अल्टीमेट ड्रीम है। तो वो मुझे कहता है कि यार मैं हामिद करजाई के लिए मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो उस्ताद बहरुद्दीन रब्बानी के लिए मरूंगा जो बदख्शान पे रहता है, या पंजशीर में जो है अहमद शाह मसूद रहता है उनके लिए मरूंगा, ये नेशनल लीडर के लिए नहीं मरूंगा। उनको ट्रस्ट नहीं है, उनके लिए नेशन सेकंड है। इसीलिए ये जो लास्ट 20 इयर्स का जो डेवलपमेंट का फेज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास था कि उसको नेशन के अंडर पे जो है फैब्रिक पे उसको जोड़े, उसको ऐड करें। अनफॉर्चुनेटली दैट हैज बीन लॉस्ट। तो पहला तो रीजन ये हुआ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप अगर देखें इंडिया में सराउंडिंग जो कंट्रीज है उनके पॉलिटिक्स होते हैं, उनके बायलैटरल इन्फ्लुएंस होता है वगैरह होता है। अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होता है। कैसे? पाकिस्तान को अफगानिस्तान इसलिए चाहिए कि उसको बैकयार्ड बनाएगा, एंटी जिहाद, वहां जिहाद बनाएगा, विद एंटी इंडिया सेंटीमेंट बना के कश्मीर में भेजेगा और कहीं भेजेगा उसको, उसलिए पाकिस्तान वहां चाहिए, अफगानिस्तान चाहिए। चाइना को इसलिए चाहिए बिकॉज $3 ट्रिलियन का वर्ल्ड का बेस्ट लिथियम, वर्ल्ड का बेस्ट यूरेनियम, वर्ल्ड का बेस्ट गोल्ड, बेस्ट गैस, कोल, आयरन ओर सब वहां पे अवेलेबल है। कॉपर उनको चाहिए इसलिए $3 बिलियन का। उसको इसलिए भी चाहिए अफगानिस्तान बिकॉज उसका उसके थ्रू जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो जबरदस्त कनेक्टिविटी पैदा करेगा टू सेंट्रल एशियन रीजन, तो वो गेटवे है, तो उसको इसलिए भी चाहिए। रशिया को इसलिए चाहिए अफगानिस्तान कि वहां पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका इन्फ्लुएंस होगा तो उसको वो चाहेगा नहीं कि कोई सुपर पावर आकर उसके घर के बगल में दरवाजे में बैठ जाए वहां पे। और इंडिया को अफगानिस्तान इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पे जो अगर हम नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान हम हमारे अगेंस्ट उसको यूज करेंगे। तो इसलिए इतने इंटेलिजेंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इतने इंटेलिजेंस होते हैं उस कंट्री के ऊपर, उसको जानबूझ के अनस्टेबल रखा गया है, जानबूझ के अनस्टेबल रखा गया है। और अभी ये किताब में मैंने काफी खुलासा किया, इतना $2 ट्रिलियन हमने खर्चा किया, 3 लाख से लोग मरे वहां पे, फिर भी देखिए 15 अगस्त को लिटरली इट वाज अ वॉकओवर, तालिबान को वॉकओवर मिल गया। तो उस कंट्री का जो है उसको जो स्टेटस में है उसमें रहने के पीछे यही 3-4 बड़े रीजन है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा था कि ठीक है, एंड सडनली तालिबान कम्स, उसके बाद देखिए जब जब यूएस फोर्सेस गए ना नेटो के साथ अफगानिस्तान पे, मैंडेट क्या था? एक्सप्रेस मैंडेट ये था कि दे विल अप्रूव द तालिबान फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इरिवर्सिबली डिग्रेड देयर कैपेसिटी। ये उसका एक्सप्रेस एजेंडा था, इसी काम के लिए गए थे। 2 महीना के अंदर बाय नवंबर 19 जो है 2001 पे ये अचीवमेंट हो गया था। फिर जो है व्हाइट हाउस को लगा कि यार इससे तो बड़ा कुछ और करते हैं, तो उसने ग्रैंडियोस जो है स्टेट बिल्डिंग का एजेंडा लगा दिया कि हम ये स्टेट बिल्डिंग बनाएंगे वेस्टर्न स्टाइल पे, यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स होगा, सिविल सोसाइटी का फ्रीडम होगा और ब्ला ब्ला वॉट एवर नॉट। तो वो सब कुछ चाहते थे वहां पर करने के लिए। वहां पे एक बड़ी भारी चूक हुई। कोई भी कंट्री को आप एक दूसरे कंट्री का मॉडल ला के नहीं थोप सकते हो। वहां मेरे ख्याल से अगर निकल जाते यूएस, जब तालिबान को ओवरथ्रो किए थे, तो शायद तालिबान से बहुत अच्छा सौदा हो जाता
और शायद कंट्री स्टेबल भी कहीं ना कहीं हो जाता है। उसने उसको जो है टर्न कर लिया कि हम जो उसको ग्रैंडियोस स्टेट बिल्डिंग बनाएंगे। वहां पे एक भारी गलती ये भी हुई कि उन्होंने कह तो दिया हम इसको स्टेट बिल्डिंग बनाएंगे, अभी कोई लेमैन स्टूडेंट भी बताएगा स्टेट बिल्डिंग अगर कोई कंट्री का करना, सबसे पहला आर्म क्या होता है? पहला मंत्र होता है आर्मी को स्ट्रेंथन कीजिए। बट ये ख्याल यूएस को 2012 में आया, यानी कि एग्जैक्टली 11 साल बाद। अरे नहीं नहीं, स्टेट बिल्डिंग में तो पहले आर्मी को बिल्ड करना पड़ेगा। तब तक 11 साल बीत चुके थे और वहां पे एक बड़ा सीरियस जो है ब्लंडर उसने यहाँ पे किया। और 2012 में ऐसे नहीं कि उनको अचानक ख्याल आया, दिवा सपना आया कोई कि नहीं अब तो हमको जो है तालिबान को आर्मी को बिल्ड करना है। उनको लगने लगा पहली बार कि हम यहाँ हार जाएंगे, हम यहाँ जीत नहीं सकते हैं। तो उसने क्या किया, ये दो एजेंडा को किया, एक तो आर्मी को स्ट्रेंथन करो और पीस प्रोसेस का पासा उसने जो है फेंका तभी कि पीस प्रोसेस के तहत जो है बात करते हैं। और ये 3-4 मरतबा पीस प्रोसेस का ड्रामा किया उन्होंने। पहले तो 2014 में किया, लंदन कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाया पाकिस्तान, रशिया और यूएस को लेके, वो भी फेल कर गया। उसके बाद जो है फिर फाइनली जो है दोहा का वो पीस प्रोसेस स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली इन्होंने अहमद खलीलजाई, जो इनका जलमई खलीलजाद जो इनका पीस हुआ था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जस्ट 3-4 वीक पहले। उसने कहा यार हम तो जानते थे कि हम हार जाएंगे, इसलिए हम पीस का बात कर रहे थे। दैट्स ट्रू। मैंने ऐसा कोई पीस प्रोसेस नहीं देखा वेयर बाय द यूएस एंड and the Taliban are fighting each other tooth and nail from Monday to Friday, and then Saturday they are going to Doha and breaking bread, singing peace carol, and joining together. तो वो पीस प्रोसेस चलने वाला था ही नहीं। तालिबान वाज वेरी क्लियर, यार ये पीस प्रोसेस चल रहा है, एक साइड आइटम है, चलने दो उसको, साइड आइटम है चलने दो, ये मेन कोर्स डिसाइड नहीं करेगा, मेन कोर्स तो हम डिसाइड करेंगे। तो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती हुई, पीस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने तालिबान को लेजिटिमाइज कर दिया वर्ल्ड में। वर्ल्ड में मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले आया, इंटरनेशनल न्यूज पे ले आया, सबको समझा दिया कि यही भविष्य, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। वो एक बड़ा भारी भूल हुआ। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस देखिए 2001 का तालिबान और 2021 का तालिबान बहुत डिफरेंट है। 2001 में सब रेडिकल लोग थे तालिबान पे, और 2021 में ऐसे नहीं कि रेडिकल लोग भाग गए हैं, बट कुछ मॉडल लोग भी आए, जैसे मुला ब्रदर हैं, एक शाहीन करके हैं, तो कुछ मॉडरेट लोग आए हैं। तो अभी उनके अंदर जो है कशमकश चल रही है कि कौन ज्यादा वर्चस्व यहाँ हासिल करेगा, मॉडरेट फेस या फिर जो है रेडिकल फोर्सेस। तो वो कशमकश कहीं ना कहीं अंदर चल रही है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि उनको ये बात पता चल गया कि 2001 में हम कुछ भी करें बैकयार्ड में कोई देखने वाला नहीं था। अभी क्या पूरा वर्ल्ड का जो है फोकस उसमें आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि हमको अपना जो गुड बॉय वाला इमेज है हमको वो दिखाना है, और वो दिखाने से ही हमको वर्ल्ड एक्सेप्टेंस मिलेगा। और तीसरा चीज है, अभी पाकिस्तान लाइक अफगानिस्तान इज ऑलमोस्ट द वर्ज ऑफ हंगर। अगर विंटर प्रोलॉन्ग कर गया तो लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो उनके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर है तालिबान के ऊपर कि कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लाओ, इंटरनेशनल बायलैटरल रिसोर्सेज लाओ, और यहाँ पे लोगों को जो है स्टारवेशन से बचाओ, लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड चल रही है। आज के डेट पे अगर आप मुझे कहो कि जो मिनिस्ट्री डिक्लेयर किए हैं उनमें से आपको क्या लगता है, मॉडरेट फेस का ज्यादा वर्चस्व है कि रेडिकल का है? मैं कहूंगा रेडिकल का है, क्योंकि 16 प्रोस्क्राइब्ड यूएन टेररिस्ट जो है वो उस मंत्रिमंडल में है। हकानी नेटवर्क के जो जलालुद्दीन हकानी, तीनों बार इंडियन एम्बेसी में अटैक हुआ था, पूरा कंक्लूसिव प्रूफ था कि उन्होंने किया था, वो उनके गृह मंत्री हैं। उसके प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद हसन अकुंद, उन्होंने बामियान का जो इतना बेहतरीन वो स्टोन बुद्धा था जो इजीली 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनता था, उसको तोड़ने का उन्होंने राय दिया। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आपका जो है सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, उस कंट्री का ड्रग लॉर्ड है, पूरा ड्रग का धंधा वो करता है। तो ये जो है ये कसमकस चल रही है। बट कहीं ना कहीं उन लोग वो जो होता है, अभी फिलहाल अपना गंदा चेहरा नहीं दिखाएंगे, अभी थोड़ा मॉडरेट चेहरा दिखाएंगे। और जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान से, बहुत सारे फ्रेंड है, कुछ कुछ लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कुछ कुछ महिलाएं गवर्नमेंट स्टाफ जो है वहां पे जा रही है, टीवी में महिलाएं जो न्यूज पढ़ने के लिए उनको बोला बुर्का पहनने के लिए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिख रहा है। आगे देखें क्या होता है। वैभव, ये जो रेडिकलाइजेशन की बात की थी, एट द सेम टाइम जो सर बात कर रहे हैं उसके अंदर हम एक ये चीज देख रहे हैं कि इमेज को चेंज करने की कोशिश है। अभी इमेज चेंज करने की कोशिश को मैं वहां से देखिए एक बार अपने यहाँ आता हूँ, और आपने चूंकि सावरकर पे काफी काम किया है पिछले कुछ सालों को में अगर देखा जाए तो सावरकर की इमेज को ऊपर उठाना एज वेल एज मलाइन करना, ये दोनों ही चीजें जो हैं दोनों तरफ से बहुत
ज्यादा हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल पूरा गेम है एक नैरेटिव को सेट करने का, ये जो फेस एक बनाने का, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये बात करें? मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा, अंग्रेजी में करूंगा, क्योंकि नागपुर में रहकर मुझे बुरी हिंदी बात नहीं करनी है। सुजीत जी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, तो उनकी बात अलग है। विनायक दामोदर सावरकर was almost a forgotten political figure at the time of his death in 1966. He had been named as an accused in the assassination of Mahatma Gandhi. He went to prison for a year after India achieved independence. He was acquitted of all those charges. And when he died in 1966, everybody was keeping a distance from him, including the so-called right wing at that point in time, the Jan Sangh, because he had been implicated in the Gandhi assassination, and that was too much of a stain for them to really, get anywhere close to. When Savarkar's death happened, it was assumed that he would always remain an obscure political figure because the Nehruvian point of view was dominant there. And it was assumed that because of what Nathuram Godse had done, Hindu nationalism would never really rise to the surface or become popular in any sense of the term. Suddenly in the 1980s, you see the spectacular rise of the BJP as a result of the Ram Mandir movement. And Savarkar is brought back into conversation, ironically, by his political opponents. Because when Atal Bihari Vajpayee pays tribute to him and decides to have a plaque at the Andaman and Nicobar Islands, then Manishankar Iyer, who also contributed to Narendra Modi becoming Prime Minister because he called him a chaiwala and all of that, he said that, I will oppose this. Savarkar's plaque you cannot have in the Andamans. And Savarkar suddenly comes to life with the rise of the BJP. And he has especially become prominent in the last 1 decade for two specific reasons. One is Rahul Gandhi's statement that he was a traitor and a stooge of the British Raj. And Rahul Gandhi has said that he was writing mercy petitions to the British at a time when Gandhi and Nehru were sleeping on the dirt floor of a jail in India. And then the Congress on Twitter called him a traitor officially on its party handle. So that resulted in a lot of controversy. And these statements came in the context of Narendra Modi and Amit Shah holding him up as one of the sterling figures of India's independence movement. So Savarkar has, in the past few years, become far more prominent than he was at various points in his own lifetime. In the first part of his political career, in the first phase of his own life, Savarkar was a very prominent political revolutionary. He was considered extremely dangerous by the British Raj, which is why he was imprisoned and put behind bars and tortured in the Andamans. And he was given 50 years in jail. And there were two things that he did not get. One, he did not get any stay in an Indian jail, which, if Rahul Gandhi is really making comparisons, an Indian jail was far more mild than Kalapani, as we all know. That does not take away from the contributions from Mahatma Gandhi or Nehru or others. It was not their fault that they were in an Indian jail and not in Andamans. But to make this comparison, I thought was extremely immature and also unfair to the political revolutionaries who suffered a great deal at Kalapani, including Savarkar. Two things he didn't get. One, he didn't get an Indian jail. He was sent to Kalapani. The second, there were certain rules in the Andamans. For instance, even if you were a political prisoner और आपको life imprisonment शायद मिल गई या 10-12 साल की मिल गई, most people got 10 and 12 years. Savarkar got 25 years each for two separate crimes. And
and to be carried out successively. तो पहले क्राइम के लिए 25 साल, फिर दूसरे क्राइम के लिए 25 साल. And when he got onto the boat, and a British officer said to him, "Ki, now you'll be out in 1961," and the year was 1911. So imagine, he thought he's going to be dead when he comes back. तो वहां पे कुछ नियम थे कि 6 महीने के बाद पॉलिटिकल प्रिजनर को he was allowed to be outside the prison and work on the farms or in the penal colony of the Andaman and Nicobar Islands in Port Blair. He was not allowed that. He was given long periods of solitary confinement. He was made to stand with there's something called crossbar fetters. Crossbar fetters का मतलब ये है कि you are tied to a wall, your hands are tied to a wall, and it's a sort of triangle, and there are iron bars running vertically like this and horizontally like this, and there are chains. So you're chained and you're held so tightly that you can't move. So your back starts aching, your entire body starts aching, your feet start hurting, and you can't move for 8 to 10 hours. You want to use the toilet, you can't. So what if you have to respond to the call of nature? Political prisoners, including Savarkar, soiled themselves at that spot, wherever they were being held, with crossbar fetters. Savarkar was given that, other political prisoners were given that. There were other very indecent punishments, like there was a certain kind of fetter where the back hurt so much that you just could not bear it, but you had to stand like that. The torture was indescribable. In fact, Kalapani of the British Raj was the Guantanamo Bay of the 20th century. And Savarkar went through that, after which he came out of jail by accepting certain conditions of the British, and which is why the controversy has arisen that he wrote mercy petitions. Abhi, if you will allow me to speak on these petitions. The reason I wrote a biography of Savarkar, a book on Savarkar, is these mercy petitions. I was reading an English news magazine where the writer of that piece had written that Savarkar wrote multiple mercy petitions to the British Raj, and in his lifetime he tried to hide the fact that he wrote these mercy petitions. And I, the writer of that piece, was claiming, I am bringing this to light. That see what a scoundrel he was, or what a stooge of the British he was. And when I read the piece, I instinctively knew there was something wrong with it. The reason I knew it was because I had read in my childhood years his most famous book in Marathi, Maji Janmatep, which is about his imprisonment at Port Blair. And I remembered vaguely reading about something like that in that book. Then I picked up a Marathi newspaper, because I read English, Marathi, Hindi. And there was a Savarkar Bhakt who had written a letter to one of the prominent Marathi newspapers saying that this is all a lie. Savarkar never wrote mercy petitions to the British. He never wrote any petitions to the British. This man is lying and this controversy is useless. Now I knew that was also not correct, because Savarkar in his own book, you please read his book on my transportation, my transportation for life in the Andamans. He himself has written in detail about these petitions that he sent to the British Raj. So, and this book was published in the year 1928. So Savarkar's critic, who was claiming that he had discovered these petitions and brought them to light, was lying. And Savarkar's follower, who was saying Savarkar never wrote these petitions, was also lying, because Savarkar himself has written about those petitions. Now, the thing about these petitions we have to keep in mind is, the very first thing we have to keep in mind is it was a legal mechanism available to prisoners at that point in time. Before Savarkar, in the year 1908, Satyendranath Bose, one of the Bengali revolutionaries of the time, they were all implicated in the Khudiram Bose bomb plot, the first bomb by an Indian on Indian soil used against British officials. Satyendranath Bose was sentenced to be hanged, convicted and sentenced to be hanged. He wrote a petition
similar to what Savarkar had written. This is before Savarkar goes to Kalapani in 1910-11. This is 1908. And other Bengali revolutionaries of that period who are similarly sentenced to be punished write similar petitions. When Savarkar is at Kalapani, Barindra Kumar Ghosh, Aurobindo Ghosh's brother, who is a political revolutionary, and several other revolutionaries wrote similar petitions to the British for their release. After Savarkar gets out of Kalapani in the 1920s, we have the Kakori conspiracy case. You guys some of the youngsters may have read it in their history books, or perhaps not, because we're not even taught all these things. People in the Kakori conspiracy case, like Sachindranath Sanyal, Ashfaqullah Khan, and all the chief conspirators were sentenced to death in that case. They all wrote these mercy petitions, like Savarkar did. So a number of political revolutionaries wrote these petitions. But fortunately, we do not call them traitors. Savarkar is called a traitor for a political reason, because of the political opposition to Savarkar. And I am absolutely fine with it. I am not at all here talking about Savarkar's political ideology. You may agree with Savarkar, you may disagree with Savarkar. You can say that I completely agree with his political ideology, and he turned to Hindutva in the 1920s and then became more and more of a Hindutvavadi, and at times made very strong anti-Muslim statements, and his politics acquired a certain color. You can completely disagree with all of that. That does not make him a traitor. He was, in the first phase of his life, one of the pioneering freedom fighters of India. The Congress, the Indian National Congress, adopted the Purna Swaraj slogan in the year 1929. Till then, we were only talking about dominion status within the Raj, under the umbrella of the Raj. Political revolutionaries like Savarkar spoke of complete independence for India at least 20 years before 1929, at least. And he created serious trouble for the British. He led a group of young and patriotic Indians in London, and among his big admirers were Bipin Chandra Pal's son Niranjan Pal. He was a close friend of Savarkar's. There were people like Asaf Ali, who listened to Savarkar at India House, and he said that the sheer sincerity of the man is astonishing, because there were many better speakers at India House in London than Savarkar. But Savarkar's commitment to the Indian freedom struggle was, in the words of Asaf Ali, extraordinary, and it was sincere. So I feel that we may all have different political ideologies, we may agree and disagree. But calling people traitors, we don't call Satyendranath Bose a traitor. We do not call Ashfaqullah Khan and Ramprasad Bismil a traitor, fortunately, or Sachindranath Sanyal. Similarly, it is not fair to call him a traitor. This is on the limited point of the mercy petitions. Sir, if you have 2-3 more minutes. So the Hindu nationalism and that religious politics we are talking about. Islamic countries, they have their own politics for Islam. So what is actually the view of Islamic countries for Afghanistan? How Islam is playing a role in Afghanistan? So they, like I've seen half of the Muslim countries in Asia, so they compete with each other. Like Islam is the purest form of Islam. Yours is second hand. Saudi Arabia said, no, my Islam is the purest form. Pakistan said, no, we are the powerhouse of Islam. So that keeps on, fighting with each other. Now, I met a jihadi, and he fought the US forces in one of the villages. And I asked him, this youth, man, why did you join these jihadi forces, and fighting the US occupation? He told me a very nice thing. He said, look, I'm unemployed. I'm illiterate. My father has only, half bigha of land, which is not enough, to support my livelihood. In Afghanistan, there's a reverse dowry that goes. That means man has to pay to woman to marry. So I cannot marry. So I'm a laughing stock in my whole village. One fine evening, one Maulvi Sahib came, from which country he is. So he came and he said, look, Islam is on your shoulder, you have to jihad.
do jihad for the purest form of Islam. You are the savior of Islam. You can only save the Islam. He said, for the first time in my life, I felt I am valued. I am there for something, and I could connect with my religion. And that's why I didn't even give a second thought, spare a second thought, and joined his movement, and started fighting the US forces. So they, like, I've seen village after village, I was posted in Afghanistan. If you ask 20 villages and say, like, villagers, please come and let's clean the road and it's going to connect you to the villages and all those things, it will make you look good, they'll not come. If you say a Maulvi has come, he'll preach you something, they'll immediately come. The connect is so strong, and that urge, that I am practicing the purest form of Islam, my Islam is the purest form of Islam. And all this terror group, if you see, and I've done extensive study on all these things, everybody claims, that we will have a different version of Shariat, which is the best Shariat. Taliban says we have the best Shariat. TTP, which is Tehreek-e-Taliban, Pakistan, they said we have the best version of Shariat. ISI says we have the best version of Shariat. So there's a competition going on, within these forces. Who is going to, lead the best version of Shariat? Any question for Sujit sir, because he's about to leave. So any question for him? So you see, there are 2-3 things. First thing I told that, said that, while the state building agenda was envisioned in 2001 November, the effort to build a competent Afghan army was, taken up in 2012. So 11 good years is lost. That's first thing. Second thing, I have almost traveled the length and breadth of the country, like, and as I told in the beginning, for them, nationhood comes second. First thing is, the regional ethnicity, the local leader. They'll die for the local leader, but not for the democratically elected leader. No, if you see the peak of Taliban power in when Taliban was in charge, 1996 to 2001, till September, they couldn't capture 3 provinces: Mazar-e Balkh, Badakhshan, and Panjshir. You know why? Because there are 3 very strong leaders there. Bahruddin Rabbani in Badakhshan, Ahmad Shah Massoud in, who is called as the Lion of Panjshir in Panjshir, and Abdul Rasim Dostam in Mazar-e-Sharif. They, formed a cohesive local youth army force, and fought tooth and nail with the Taliban. They did allow Taliban to enter this country. No, I don't know what is the reason, when you bring the same guys and, form a cohesive unit of, Afghan army, the fighting ability, the spirit to fight, seriously erodes. They don't get that motivation to fight. And then there are additional n number of reasons. Like, when they're fighting the Taliban in the month of, April, May, June, 3 to 4 months of salary was, pending. So you see lack of motivation. Like, and then, there were, arms and all those ammunitions there. Like half of the pilot, they were split. They ran away to Uzbekistan. So there are multiple other reasons, but I think primary reason is that, they lack that capability to fight for a national cause, For the region, they will fight, but when you bring them together, somehow, that thing doesn't translate into that particular thing. And the US Army also, like a lot of words are going on that, US Army has been training. Technically, if you see, and having stayed in Afghanistan, I'm saying it great authority, that, from 2014, this training was completely shifted to virtual mode, online, much before the pandemic taught us to go online. Military training online, ask anybody, is never going to be useful. No, why they went to online, because there are a lot of Taliban, who got inside the Afghan army. And with the first sight of opportunity, they started fighting their, US, killing their US trainer and all those things. So they completely that switched the, training into online mode. That was also inefficiency, in training and all those things. So all these things, together led to the collapse. Thank you, sir. So Yeah, thanks a lot. And I'm really sorry to leave midway. Unfortunately, I have a flight right now to catch. So thanks. Lovely interacting with you. So coming to the political conspiracies, and one of the Vaibhav's latest book is on Hitler and India, and you also wrote about Netaji meeting Hitler. Yeah. So Netaji's death was quite mysterious. We all know a lot of things happened, but a question which keep coming to my mind: we know that he was having ideological difference with Congress. Mhm. Why he went to Japan? Why he went to Germany? Germany का focus India थोड़ी था. Germany
was against British. ठीक है. We were fighting against British. Germany was fighting against Churchill, but why they would support us? So why Netaji actually put his energy in going to these places and trying to get support from there? Yeah, I'll tell you why. Some of the reasons that he went to Germany had to do with India's domestic politics and politics within the Indian National Congress at that point in time. And the other reason was, of course, related to the war. The point about domestic politics was that Subhash Chandra Bose was not an admirer of the Nazis at all. When Hitler came to power in 1933, Subhash Chandra Bose was among the earliest Indians to write to Hitler asking him to delete certain anti-India remarks that Adolf Hitler had made in his autobiography, Mein Kampf. In 1933, Netaji goes to Europe. He asked for a meeting with Hitler. He was asked, why do you want to meet Hitler? He says, because he has made statements against India and Indians and the Indian freedom struggle in his autobiography, and I want to meet him and tell him that you should delete those remarks. And Hitler refuses to meet him. He asks again and again, and they refuse to meet him. In 1933, I have written in my latest book, Hitler and India, a number of Indians in Germany, whether they are students or professionals living in Germany. Sarojini Naidu's son, Jayasurya Naidu, is picked up from his lodgings in Berlin. He's studying as a mathematics student at Berlin University, and he's assaulted and sent to prison. And he is assaulted with the butt of the revolver by the Nazis. Rabindranath Tagore's grandnephew, Saumendranath Tagore, is arrested on the borders of Germany. He had left Germany to undergo some treatment for tuberculosis, and he was coming back. He was arrested at the border in 1933. Within a month of Hitler coming to power, he's assaulted there, and he is imprisoned on the charge that he is plotting to kill Adolf Hitler. Similarly, various other Indians are sent to prison, arrested without any charge. The first Indian to be thrown out of Nazi Germany is A.C.N. Nambiar, who heads the Indian Information Bureau in Berlin. He is a prominent member of the Indian National Congress. He gets funds from the Indian National Congress to push the cause of Indian freedom in Berlin. The Nazis attack the office of that India Information Bureau, smash all the furniture to pieces. Nambiar is arrested from his lodgings in Berlin again and thrown into prison. When all this is happening, Netaji is obviously very upset. And this is something we are never taught, that Indians were tortured and harassed and arrested in Nazi Germany for being brown people. Because we are under the assumption that Hitler spoke of the Aryan race theory, so Hitler was pro-India. No, the opposite is true. And I can explain that later if you want. So Netaji is upset. He protests against that. In 1934, some Indian students are abused on the streets of Munich and Berlin. And they are called dogs, and they are called, well, calling Indian dogs was a very normal thing at that point in time. Because that's what used to happen in Britain also, on British soil also. So it was not as if only the Nazis were racist. We had racists all over the place. The famous comment that Churchill made about Indians and Hindus is that the only fault with the Hindus is that there are a lot of them. They breed like rabbits and all of that, So Churchill and Hitler are pretty much similar, and Churchill's policies lead to a famine in Bengal in 1943, which results in the death of 3 million people, at least 3 million people. So Churchill was very similar to Hitler in many respects.
So Netaji is upset in 1934 when these attacks start happening on Indian students in Berlin and Munich. Netaji is the person who writes statements on behalf of these student organizations against the Nazi government and sends it to the Nazi government. In 1936, Hitler, in a Nazi party rally in Munich, makes anti-India remarks. He says, you know, these Indians, they don't even know how to walk. It's because of the British that they learned how to walk. इनको चलना भी नहीं आता था. ब्रिटिश लोगों ने इन्होंने सिखाया. मतलब the white man taught the brown man how to walk. Netaji is very upset. He's in Europe and he issues a statement that I'm extremely upset. I don't even want to talk right now. I'm that upset. What does he think of himself? And, you know, how can he abuse Indians in this manner? Because he abuses us in his autobiography. He abuses us outside his print books, in speeches. Now he's saying we don't even know how to walk. And he goes on record to say that if Germany thinks others will lick their boots, they may well do that, but we Indians are not going to do that. Now, this is Netaji's position on Nazi Germany. So when we call him a Nazi collaborator, it's a very complex subject actually. It's not black and white. Then Netaji becomes Congress president in 1938. For the second term as... Just add Yes. one more question. So I always think Netaji जब Congress president बने, he left that position because of the Gandhi's force. अगर वो रह जाते तो क्या होता? So if you can also address that. So we can only speculate. वो रह जाते तो क्या होता? But in 1938 he becomes Congress president. Then he is going to get a second term as Congress president. And then because of the shenanigans within the Indian National Congress, he does not get the second term. He even wins that election. And then Mahatma Gandhi is very upset with him. And then Pattavi Subbaramaya comes in and all of that happens. Okay. And Netaji is removed as Congress president. He is very upset. He forms the forward bloc. So what happened in 1938 was Netaji got completely sidelined within the Congress party. And he had a tremendous respect for Gandhi, regardless of what had happened. And so did Gandhi for him also. There's no doubt about that. But Germany, see, we'll have to look at things in context. We can't look at things from a 21st century point of view and say that, oh, why did Netaji do that? The war is on the horizon. Britain and Germany are about to go to war. Hitler wants an alliance with Britain. But the way the situation is evolving is that Britain may be fighting against Germany. Hitler starts attacking Austria. Then he attacks Czechoslovakia. The Munich Pact happens. And Hitler keeps scoring point after point. And the British, and whether it's France or the other countries, they keep conceding things to him. His aggression seems to be working. When the war breaks out in 1939, he has tremendous success at the beginning. It looked like he was just going to run away with the war. In fact, until October, November 1941, when the Russian offensive really got stuck in the snow, as we say, Hitler was going great guns in the war. He had a series of successes in the war. Between him and Stalin, they divided Poland, and this piece of the cake is yours, that piece is mine. And the aggression was crazy. So Subhash Chandra Bose felt that since Britain is fighting against Nazi Germany, and he was certainly of the conclusion, and he has used these words, that Nazi Germany has negative energies. Now, this is a very important point because he's calling it a negative energy. But the situation in the world is such that perhaps we can convert it into a positive energy, and we can use that military positive energy in a positive way to push for the case of Indian political liberation from British rule. So it is a classic case of my enemy's enemy is my friend. Now, we are all taught all the time that Saddam Hussein is evil, right? But Saddam Hussein was in favor of the Indian position on Kashmir. He's one of the very few people, and plus a Muslim ruler who openly backs India on the issue of Kashmir. Now, in foreign policy terms, when you're going to decide, you're going to decide that Saddam is your friend.
Okay, this is real politic. But interestingly, Netaji then goes to Berlin. So that's how the choice of Nazi Germany happens. Since you mentioned, okay, why did the choice happen? Because he felt that something could be obtained from there. The other reason was Hitler was at that point in time in an alliance with Stalin at the start of the war. And Russia was quite popular in India at that point in time because of the Russian Revolution and left wing ideology, which was deeply rooted at that point in time. So he feels that Russia is popular. If Russia and Germany have joined hands, maybe we could use their forces to force the British to leave India. In fact, when Hitler attacks Russia in 1941, Bose tells the Nazi officials that this is going to be very problematic because Indians are not in favor of Germany. Indians know that Germany is against them. But if they are going to back Germany at all, it is because it is an alliance with Russia, which is quite popular in India. But now you are attacking Russia. Now it's going to be very difficult for me. So see, it's a very complicated picture, which we cannot just say, you know. Very interestingly, from the moment he lands on Nazi soil, Netaji has a very difficult time in Nazi Germany. So it's very simple. Why are the anti-Indian Nazis entertaining Bose in the first place? They are entertaining him because Italy has enthusiastically conveyed to the Nazis that we could use him as a propaganda vehicle. And Hitler is convinced that perhaps we could do that. So they want him as a propaganda vehicle. He is looking at it from the Indian point of view. He tells him the Nazis must issue a declaration in favor of free India to put pressure on the British Raj. Hitler says, no, I will not issue that declaration. Then Bose for a long time refuses to do any propaganda for the Nazis. Now, this is something we are not taught. And there is this constant tension happening between the Nazis and Bose. And at one point, they get so frustrated because he says that I'm going to start the free, radio service, do this, do that. They are trying to push him. And he says, no, first issue a declaration in favor of free India. So it reflects his sense of integrity. And they keep saying no. Things come to a point where they're so frustrated, they say, these people have put it in writing, the Nazi officials who are dealing with him, and I've seen the records, that it's getting to be very difficult to deal with this man. He's inflexible. He's refusing to do what we want him to do unless we give him what he wants in favor of India. So let's send him outside Germany. It's getting to be, he's too much trouble. Let's send him to Switzerland. So they just want to send him to Switzerland. And he keeps trying to tell the Nazi officials, I want to meet Hitler, I want to meet Hitler. Hitler keeps him waiting for more than a year. Finally, he tries to meet Mussolini, and Mussolini agrees to meet him. And he tells Mussolini, I'm not getting a declaration in favor of Indian freedom. And he convinces Mussolini. Mussolini agrees. Okay, Italy will issue a declaration in favor of Indian freedom. What about Japan? Japan also agrees. We will issue a declaration in favor of Indian freedom. They again go to Hitler. Hitler says, no, I will not do that. I'm not in favor of freedom for India. He wanted India very much to be under British rule. Even in the midst of the war, he not only wanted reconciliation with Britain, but he actually wanted an alliance with Britain. He never wanted to fight them because he thought they were the Nordics, the white man who had the right to rule the earth. So it's a complex relationship. But even in his meeting with Hitler, Bose tells him, please delete your anti-India remarks in Mein Kampf. And that is a reflection again of the integrity of the man. Bose is obsessed with the idea of Indian independence. Now, looking back, does it look like sound judgment? It does not. But because it's very clear what Hitler did. But if we look at it in the context of the times, then, well, he was trying out something in terms of foreign policy and in terms of securing an alliance which would have got freedom for India. So it's a complicated picture.
he would be considered a value addition in terms of propaganda purely because there is a war on and there's a need for the Nazis to put pressure on Britain and for the Italians and the Russians who at the time are fighting with the Nazis to put pressure on the Allies. So the Axis powers feel that he could be a good piece of, you know, propaganda for them. And that is why they are willing to. So Hitler does it very unwillingly. They are not initially willing. By the way, Bose didn't want to go to Germany at all. We say he chose Germany. He didn't choose Germany. He wanted to go to Russia. Russia didn't allow him. And he's frustrated. So he gets in touch with the Italians, and the Italians will also not let him in. But they say, why don't you go to Germany instead? We'll try and convince them to take you. And then via Afghanistan, and we know how he went there. The Italians give him the assumed name, the false name, Orlando Mazzotta. So he goes to Germany with the Italian name Orlando Mazzotta, and he lands there. So his choice actually is not Nazi Germany at all. He lands up there because he's caught in this situation where he has a very poor choice actually. Yeah, yeah. Mini, that's a very good question you've asked. Yes, that's a good question because he may not be the Congress president, but Netaji is a hugely popular leader in India. And he's a favorite of the young generation. He's an idealist. So, Mahatma Gandhi, no doubt, is the number one leader of the Indian national movement. But Bose is hugely popular, just like Jawaharlal Nehru, just like Patel. Bose is a hero already. That is why he'll be useful. Otherwise, they would not have entertained him if he were not so popular. Right. Well, actually, I'm not an expert on that subject. See, like we know, nothing is clear. There are so many theories, and since the subject is political conspiracies, well, the conspiracy theories continue to be fed because of the fact that we do not declassify documents are national documents in time, whether it's documents about the India-China war, whether it's about Lal Bahadur Shastri's death, whether it's about Netaji Bose's death. All the documents are lying there. Even the Gandhi family's documents, some of Indira Gandhi's documents, Sonia Gandhi refuses to release this. Now, this government destroyed many documents from the past. But was there a consultation with scholars, archivists, experts on which documents should be destroyed and which should be preserved? Nobody consulted anybody. They were just destroyed. So every government behaves in a certain manner. They have their own vested interests at heart. And that is how these controversies continue to fester. I mean, I have heard from reliable sources and experts on Netaji's post 1945 phase. I can speak on the pre 1945 phase. That even the documents. Oh, sorry. I think Mrinalini is telling us to wind up. But reliable sources say, I mean, I'm a journalist, so I'm going to say reliable sources. That even the documents which were declassified some years ago do not really throw light on that aspect of Netaji's life. Did he die in the plane crash? Did he go to Russia? Did he go? Was he Gumnami Baba? There are all kinds of theories. But unless and until we declassify files or at least check the ashes which are there in Tokyo, nobody is willing to do that because nobody really wants the controversy to end or to reach a logical conclusion. Because, yeah, yes, yes, absolutely. His daughter has said that, yeah. So, but why don't we just check the DNA and you'll get a conclusive kind of evidence. So no, but nobody wants to do that. I think this is such an interesting session. मैं 2-3 घंटे और से बात कर सकता था, but unfortunately we have another session here as well, and you also have a session. No. Okay, I also have another session, so we are ending it here. Thank you very much, Vaibhav. Thank you so much. Thank you. That's fantastic. Thanks. Listening to you. Thank you.
to Rai Sony Group.